welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. Hope you've had a great festive weekend. And here we are to update you with the latest from Bollywood and social media. मेरा नाम है सागर Koechlin. And this is me, Gunjan Saini. उसी spirit को कायम रखते हुए, let's move on and take a look at the trending headlines of the day. Sanjay Leela Bhansali ने announce की अपनी films for Diwali 2020 and 2021. सनी लियोनी को सोशल मीडिया पर एक पेंटिंग बनाने के लिए किया गया ट्रोल क्योंकि उन्होंने नहीं दिया क्रेडिट टू द ओरिजिनल आर्टिस्ट। बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर्स ने इंडस्ट्री के लिए बनाई ये दिवाली सुपर स्पेशल। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल्की ने अपने पोस्ट डिवोर्स स्ट्रगल्स को किया जूम के साथ शेयर। मूविंग ऑन, टाइम फॉर पीवी ऑडियंस रिएक्ट्स, वो सेगमेंट शो का जहां पर हम देते हैं आपके टॉप कमेंट्स। हमारी बड़ी स्टोरी थी पिछले हफ्ते की कि कैसे दीपिका पादुकोण विल बी सीन प्लेइंग द रोल ऑफ द्रौपदी इन द अपकमिंग फिल्म महाभारत। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। वहीं निर्भय तिवारी ने कहा, ओ माय गॉड, आई विल लीव एवरीथिंग टू सी हर एज द्रौपदी, शी इज माय फेवरेट एंड द वे शी हैज पोर्ट्रेड इन बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत, आई एम गोना लव टू सी हर इन मोर एपिक्स। वहीं पर पायल दास का कहना है, इट रियली फील्स गुड दैट actresses like Deepika, Anushka, Priyanka have started their own production houses and are bringing creativity to the silver screen. They don't settle for just a glimpse of a role, wait for perfect opportunity and then take it. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Jessica have done it in the West. I hope more Indian actresses do that. The change is happening and it is so refreshing to see that. You go girls. वहीं समीर शेख कहते हैं, super duper amazing, can't wait to see her again in heavy traditional Indian outfits. Everyone wants to actually see her in heavy traditional Indian outfits. Well, he further says she is the best choice for the film. No one can do this role better than Deepika. By the way, you both are looking more gorgeous in Indian outfits. Keep wearing traditional. This compliment is for us. Thank you, Sameer. Thank you so much. हमारी दूसरी स्टोरी ये थी कि 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, हाउसफुल 4, मेड इन चाइना एंड सांड की आंख। एंड हमने आपसे पूछा था कि आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो और आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आएगी। वहीं पर पंकज गुप्ता का कहना है, आई थिंक मेड इन चाइना इज डिफरेंट मूवी विद डिफरेंट स्टोरी एंड बेटर देन अदर टू। वहीं पर प्रेरणा फैन का कहना है, सांड की आंख इज बेस्ट फॉर मी, भूमि एंड तापसी आर फैबुलस गर्ल्स, देयर फिल्म इज इंस्पायरिंग एंड ग्रेट। Well, another comment from Sameer Sheikh where he says, the result, as we all know, that Housefull 4 is going to ruin the box office numbers for Made in China and Saand Ki Aankh. Housefull 4 के आगे कोई नहीं टिकेगा। वहीं पारणा दास का कहना है, हाउसफुल मूवी ब्लॉकबस्टर हिट। देखिए, आपने तो आपके प्रेडिक्शंस और जजमेंट्स पास कर दिए। ग्रेट, यू वेंट टू सी द फिल्म्स बिकॉज वी सी द नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पर ऐसे ही हमें कमेंट्स आपके भेजते रहिए एंड जॉइन इन द कन्वर्सेशन यूजिंग आवर हैशटैग। दिवाली वीकेंड पर 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, हाउसफुल 4, मेड इन चाइना एंड सांड की आंख। एंड ऑन प्लैनेट बॉलीवुड वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हिच फिल्म इज गोइंग टू गो अहेड, और हमारे प्रेडिक्शंस के हिसाब से वी वर राइट। हाउसफुल 4 स्टैंड्स नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग द नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस। लेकिन आपने कौन सी फिल्म एंजॉय की द मोस्ट? डू लेट अस नो यूजिंग अ हैशटैग बिलो। Now we have to say that these numbers were sort of surprising जब पहले दिवाली के 3 दिन थे, because nobody like थोड़ा झटका तो सबको लगा था, but then I think that's what sort of a big festival brings in. It takes a little time for it to pick up, but when it does, it shows the numbers and I'm very sure the industry is very happy जिस तरह का turnout हुआ है. Let's talk about Housefull 4. पहले 2 दिन में somewhere around 37.8 crores इस मूवी ने बनाए थे, and by the first weekend it had only made 53.22 crores, which I think Housefull 4 makers were not expecting. Yeah. They had very different numbers in mind. लेकिन Day 4, Monday को is the day जहाँ पर बहुत सारी चीजें बदली हैं। इस दिन इन्होंने 34.56 crores बनाए हैं। So till yesterday the movie had made 87.78 crores and I think that's a number जो टीम सुनकर बहुत खुश हुई होगी। Well, I'm not sure अगर मेकर्स खुश होंगे गुंजन, because actually Housefull franchise is a very popular franchise and I thought कि ये फिल्म जो है वो काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक भी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड इन 4 दिनों में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 87.78 करोड़ बनाए हैं, विच इज अ लिटिल लेस देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड फॉर इट। But we can't forget कि इसको टक्कर देने के लिए 2 और मूवीज थी in the picture. We can't forget just in Bollywood we did have Saand Ki Aankh and Made in China, True. which definitely sort of put a dent in the numbers of Housefull 4. Speaking of which, सांड की आंख दिल्ली में टैक्स फ्री हो चुका है एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट 2-3 दिन उसने भी ज्यादा नहीं कमाए। पहले 2 दिन सिर्फ 2 करोड़ कमाए सांड की आंख ने, एंड टिल मंडे के जो नंबर्स आए हैं 5.75 crores they have made in 4 days and it is picking
up, which is good news for the film. Absolutely. And along with Delhi, UP and Rajasthan are also two states जहाँ पर ये movie बिल्कुल tax free कर दी गई है. The reviews have been amazing though. Whoever has seen the movie has really good things to say. वहीं पर Made in China के numbers के बारे में बात करें, again the trend was that the first weekend till the first 3 days इतना कुछ खास numbers नहीं आए, around 3 crores. लेकिन it was the Monday which changed the game जहाँ पर उनका total हो चुका है 6.75 crores. Now that's the number which is still much lesser than Housefull 4, but knowing the cast, knowing the amount of promotions they had put in, knowing just budget में ये movie बनी है, I think it's still a very very respectable number. Right, and we were talking about these 3 films, लेकिन एक और फिल्म है जो बाजी मार गई है, which has broken a lot of records. विजय की फिल्म है तमिल फिल्म बिगिल. It's a sports drama and it has surpassed 150 crore का mark in 4 days, which is huge. And we hear only Rajnikant has managed to get these kind of numbers, and Vijay is number 2 in Tamil industry to get this kind of collection, which is huge for the industry. Absolutely, and not only the Tamil Nadu state, but Kerala, Karnataka, even some parts of North also, where the movie has grossed big numbers. Also, not to forget here कि यहाँ पर अगर हम 3 main movies Bollywood के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी number of screens पर भी उस तरह के revenue का फर्क पड़ा है. Like we're talking about Housefull 4, जो कि 3500 screens पर release हुई थी. वही सांड की आंख little over 1000 screens, and Made in China even lesser. So I think अगर हम वो share of screens भी देखें, then obviously the numbers sort of add up somewhere. But we already are seeing a growth and increase in the footfall of people who are going to watch the films, and hence I think this week is going to be crucial for all 3 films, and it's going to be a treat for the audience as well. क्योंकि अगर हम competition की बात करें, 1st of November को उजड़ा चमन आ रही है. Looks like an interesting film, but still these 3 films have a clear window because सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान खुराना की बाला आएगी. 7th of November को वो भी होंगी paid previews. 8th November को nationwide the film Bala will release. So we're talking about these 3 films getting a good run at the box office, and of course the numbers are going to add up for sure. डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने किया एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और दिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज टू हिज फैंस. उन्होंने रिलीज किया एक पोस्टर वेयर ही अनाउंस्ड दैट द फैंस कैन एक्सपेक्ट हिज नेक्स्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी टू रिलीज बाय दिवाली 2020. लेकिन इसके बाद द डबल गुड न्यूज केम अबाउट व्हेन ही आल्सो अनाउंस्ड दैट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शंस बैजू बावरा व्हिच हैज बीन इन द वर्क्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, ये मूवी भी रिलीज होगी बाय दिवाली 2021. सो डबल न्यूज हियर फॉर ऑल द भंसाली फैंस. Right, and let me tell the audience, Baiju Bawra is a 2-hero film. 2 strong characters will be featured. आपको क्या लगता है कास्टिंग में कौन 2 बड़े हीरोज आएंगे? हमारा हैशटैग यूज कीजिए और जरूर बताइएगा. गुंजन, हमने एक्चुअली पहले प्लैनेट बॉलीवुड पर भी बताया है हमारे ऑडियंस को कि कैसे बैजू बावरा इज अ 2-hero प्रोजेक्ट. इट्स अ 1952 कल्ट फिल्म जहां एक तानसेन का रोल प्ले करते हैं और बैजू जो है वो तानसेन को चैलेंज करते हैं इन अ म्यूजिकल बैटल, एंड दैट्स द स्टोरी ऑल अबाउट. और सलमान खान और शाहरुख खान का नाम सामने आ रहा था, दोनों को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन आफ्टर व्हाट हैपेंड विद इंशाअल्लाह लगता है कि सलमान खान शायद अभी पिक्चर में नहीं है. अजय देवगन आ चुके हैं पिक्चर में. राइट, अभी भी बातें चल रही हैं, कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि कौन सा एक्टर या कौन से 2 एक्टर्स कास्ट होने वाले हैं. बट ऑफ कोर्स आफ्टर द रिफ्ट बिटवीन सलमान एंड संजय लीला भंसाली द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, एंड वी नो संजय लीला भंसाली अगर वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स बनाते हैं तो उनके एक्टर्स भी उतने लार्जर देन लाइफ होते हैं. एंड आई थिंक देयर हैज टू बी वो जो गिने चुने डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें जो इतने बड़े एक्टर्स को साथ में लेकर आ सकते हैं और उस तरह से उनको मीटी रोल्स भी दे सकते हैं, दैट इट्स वर्थ वॉचिंग देम, दैट हैज टू बी संजय लीला भंसाली. सो आई एम पिनिंग माई होप्स कि अगर कोई 2 बड़े सुपरस्टार्स, वेदर इट्स अजय एंड सलमान, अजय एंड शाहरुख, और सलमान एंड शाहरुख, then it has to be Sanjay Leela Bhansali. But then there is a part of me, Saga, and I could be just dreaming too much. But how about Ajay and Ranveer Singh? Like, he has been one of his favorites too, and we've seen कि Sanjay Leela Bhansali creates magic with Ranveer Singh on big screen. So why not him? Right, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि दिवाली 2021 जो अनाउंसमेंट हुई है उसी डेट पर दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म महाभारत जो द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाने वाली है, जो वो खुद प्रोड्यूस करेंगी, वो फिल्म भी दिवाली 2021 पर
रिलीज होने वाली है, इज व्हाट देव अनाउंस्ड, क्योंकि ये दोनों फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ तरीके से शूट भी किए जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. खैर वी आर स्टिल इन 2019, वी आर टॉकिंग अबाउट 2021, लेकिन इतनी बड़ी फिल्मों का बज़ जो है वो हमेशा 2 या 3 साल पहले से ही होता है, एंड तैयारी भी उतनी ही तगड़ी होती है. एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू हैव टू मैच अप जो कल्ट फिल्म का आप रीमेक कर रहे हैं उसके उस तरह यू हैव टू डू जस्टिस टू दैट ऑल्सो, सो द प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा बना रहेगा. एंड लाइक यू सेड कि आइज आर ऑन द डेट एज वेल, बहुत पहले है, लेकिन दोनों में से कौन सी फिल्म्स ऑफिशियली उस डेट को पक्का कर लेती हैं, द डायनेमिक्स विल ऑल्सो चेंज. बहुत सारे हमने फ्रेंडशिप्स होते हुए और तकरार टूटती हुई देखी है बिकॉज ऑफ द डेट्स हियर, सो दे विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल राइट हियर. बट वेरी एक्साइटेड नॉट ओनली फॉर बैजू बावरा बट ऑल्सो फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी. सनी लियोनी ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग पोस्ट की और उसको ऑक्शन किया एक चैरिटी इवेंट के लिए. इसके बाद एक सोशल मीडिया पेज ने उनको कॉल आउट किया ये पूछते हुए कि उन्होंने ओरिजिनल आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग को क्यों क्रेडिट नहीं दिया. इसलिए सवाल ये उठता है कि जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपना आर्ट या काम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखता है तो क्या उन्हें उसके ओरिजिनल डिटेल्स या वेरीफाई नहीं करने चाहिए? शुडंट दे गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल आर्टिस्ट इज माय क्वेश्चन. यूज आवर हैशटैग एंड डू लेट अस नो. And we all know, Gunjan, कि जब भी एक celebrity they work, there is a team around them. Yeah. We understand maybe it must have missed out from Sunny Leone's part of not knowing who the original artist is. लेकिन आजकल social media इतना strong है. There is this influencer as well on social media जिनका नाम सामने नहीं आता, लेकिन वो हमेशा plagiarism को call out करते हैं, चाहे वो fashion industry related हो या art industry related हो. और उन्होंने ये social media पर लिखा, we are all for charity, but stealing an artist's original work without credit and auctioning it off for charity as your own is just dirty. और उसी से जो है बहुत सारे conversation शुरू हुए. But I think saga things got worse जब सनी लियोनी ने अपना response इस ही पोस्ट पर लिखा. उन्होंने कहा, Hello, just to give you the correct information, I was given a photograph of this piece of art. I then decided to paint it. At no time did I claim to come up with the idea. I simply painted a piece of art that I saw and I loved. It should be taken as a compliment and it was being donated to cancer patients for charity, nothing more and nothing less. Sorry you don't like the version that I choose to create while helping children in need. The painting was not about you or I, it was about trying to help. Best of luck, keep creating. We understand from her statement that of course intentions were not wrong. She had a good intention here, but like she mentioned in her post that I was given a photograph of this piece of art and she saw it and loved it. Great. But when she decided to paint it and auction it, of course it goes as a Sunny Leone auctioning a painting which she has पेंटेड. तो सिर्फ एक क्रेडिट अगर दे देती तो ये पूरा डिस्कशन होता ही नहीं. नो वंस क्वेश्चनिंग हर इंटेंशंस हियर. वेल ऑन सोशल मीडिया सम पीपल वर नॉट एज फॉरगिविंग एज अस एंड उनका कहना था, जैसे कि मेफ्लावर आइरिस ने कहा, दिस शुड बी टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंट. बाय whom? The artist who came up with the idea took time and effort to create an original piece of art, and having the audacity to defend blatant plagiarism instead of acknowledging and giving due credit. Honestly, if someone thinks because they're doing it for charity, they can be dishonest and steal someone else's hard work, they need to reevaluate a few things. वहीं पर जेनी रे ने कहा, when the attitude to being called out are way worse than a copy, a running theme on this page by the people plagiarizing others unknown or less known artists. I mean, of course, people are upset. जिस तरीके से reply किया सनी लियोनी ने, they just wanted to hear that one credit to be given to the original artist. Just another tailor का कहना था, but what's the point of this charity? Giving money to cancer patients by killing an artist? And a weird smiley, a sad smiley, and I think that says it all. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर गुंजन ये थी कि ये पूरी कंट्रोवर्सी और कॉन्वर्सेशन जो है वो ओरिजिनल आर्टिस्ट तक पहुंच गई, बिकॉज मलिका फेवरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, सनी लियोनी, अ क्रेडिट वुड हैव बीन द मिनिमम. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ थिंग, you know. What if I didn't want a copy of my work to be copied by you and auctioned? The cause is commendable, the attitude not so much.
सो पूरा मुद्दा यही है, सब यही कह रहे हैं that the cause is commendable, जो आपने किया वो सही है, but of course the original rights lay with the original artist and she is like, what if I didn't wanted to make a copy of this at all and auction it? Exactly, and I think in Indian industry, artists को credit देना या art को एक तरह से respect करना is still something new. Like people are still learning the ways and किस तरह का decorum maintain होता है अगर आप किसी के artist को. I mean, we've had multiple instances in the past also जहाँ पर things have been ripped off from other people's work and they feel cheated. They feel like something was taken away from them. But thanks to conversations like these on social media, and we've seen it happen even with the posters of the films of late. We've seen posters of Mental Hai Kya, posters, a song sequence in Saho, जहाँ पर original artist ने उसे call out किया on social media, and now the world has really become small. People just can know आपका काम कहाँ copy किया जा रहा है. Of course, it is a long process to take a legal route, but first of all, standing on moral grounds, I think even if you are taking inspiration from anyone's work, credit must be given. True. अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सारे बॉलीवुड अपडेट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड. रीसेंट इंटरव्यू में जूम के साथ एक्सक्लूसिवली एक्ट्रेस काल्की ने बताया कि कैसे अनुराग कश्यप के साथ उनके डिवोर्स के बाद लोगों ने उन्हें किया था जज. शी स्पोक अबाउट अ लॉट मोर. चेक इट आउट. You got separated, and when you got divorced from Anurag, how everybody around you suddenly asked you how are you dealing with the divorce and questions like that. I want to talk about that phase. It was a very sort of mutual divorce. You all remain friends till today, and you looked at it with a certain maturity. What was that phase like? Can you define it to me? It was very frustrating, to be honest. More because it wasn't just me being affected, but my whole family. Like people in Bangalore, neighbors of my parents, were asking them, oh, is this true? Did this happen? You know, like just trying to get all this gossip. And, you know, I felt bad that they had to answer or whatever, deal with that on my behalf. So I do remember withdrawing a little because I was so candid, especially with media. Me and Anurag would always talk about our relationship, and I've believed in being candid as much as possible. But then I realized that it can be sort of, you know, it can be manipulated and used in a way that's not nice, you know. Every time I went out for dinner with a guy, I was dating him. Same with Anurag if he was seen with a girl. So all those things are like, so I kind of withdrew. I went on a holiday, a solo trip. I spent a lot of time with myself, surfing, going back to Pondicherry. And I think that's also just a good thing to do once in a while, especially when we're in the limelight all the time and we're always living off the opinions of others. It's important to know who you are inside. If all of that was taken away from you, who are you really? We heard Kalki. That is why the question now is कि आपको लगता है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बॉलीवुड सेलेब्स अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में खुलकर बात नहीं करते या खुलकर बात करने से डरते हैं? Do tell us in the conversation, the comments below, and use the hashtag. Saga, it does get sort of very difficult. मतलब divorce अगर हम regular life में भी अगर आप जा रहे हो, then it's one thing, and then add the pressure of media. And Kalki herself said that she is a very open person. She never stopped herself from saying what she meant, लेकिन it comes back in a really, really terrible way. Absolutely, and we've heard a lot of other celebrities talk about the same. I remember Deepika Padukone speaking about how they first entered the industry with this energy, जहाँ उन्होंने खुलकर अपने relationships के बारे में बात की. They had nothing to hide when she was actually dating Ranbir. This is a long, long time ago. लेकिन उसके बाद जिस तरीके से breakup हुआ, जिस तरीके के stories सामने आने लगे, they all realized, and suddenly everyone became a very closed and private person. And they would only give a little hint here and there whenever they were very happy, you know, and they wanted to share that with people and fans. लेकिन we've seen कि कैसे
candid आप होते हो जब आपका face अच्छा चल रहा होता है, everything's fine, but as soon as something goes wrong, there are so many stories that come out that not only affects you but also your family, which is the bigger fear celebrities have. बिल्कुल, and Kalki is definitely somebody जिनको जाना चाहता है that she doesn't do anything by the rules, and of course she sets that example for everybody also कि यार जियो और जीने दो. And I think that's what she's doing with her pregnancy also out of wedlock, and she's very happily, very proudly donning it, and I think it's just making conversations for healthy pregnancies than ethically right pregnancies, I think. That's right, and we're in changing times, and I think everyone has a right to live, and they should let people live. And I think acceptance is a bigger thing here. चाहे वो media हो, I think media needs to also be a little responsible when they print articles on celebrities, and I think people around us also as a society, there has to be this mental shift where now we need to keep up with the times. Well, these were all the updates from the world of Bollywood, and with that, I have to remind you to stay tuned to our conversations on social media, and usi ke saath, time for us to say goodbye. This is me, Gunjan Seni. This is me, Sagarika Chetri. We'll see you tomorrow, same time, same place, only on Zoom. Stay tuned.